examination, you must have in-depth awareness about the syllabus, and you must have gone through with the previous year questions of that particular exam, so that you can see the route and you can reach to your destination in the given timeline. Before I start this session, before I discuss that which all topics which I'm going to mention are important, the answer to that particular question is, in the RBI Grade B notification, syllabus for phase 1 is not defined, but yes, the syllabus for phase 2 examination is defined, and in 2024, 91% of the paper in the phase 2 was asked purely from the syllabus points itself. In 2023, this percentage was 93, in 2022, it was 96, and so on. So if you can see, the syllabus part is really very important, as well as the topics which are mentioned in the syllabus are really very important. What I have heard from many of the candidates, they don't go through with the syllabus. They are preparing for different subjects like finance, ESI, or management randomly, and they end up messing up when they sit in the final examination. So today, I'm not saying that you should cover each and every topic which is mentioned in the syllabus, keeping in mind we have a examination in just 60 days, but you must follow some of the most important topics to clear this examination, which I have come up for you all. First, I'll start my discussion for phase 1. If I talk about phase 1, guys, in the phase 1, if I talk about the cutoff, I have a outline of the cutoff from 2016. So in 2016, the cutoff was 98, it dropped to 78, then 105, 122. And this is the point which is important for us, because this was the year in which descriptive section was introduced in your examination. So in 2021, the cutoff fell for phase 1 drastically to 66.75. In 2022, it was 63.75. In 2023, it was 54.25. And in 2024, again, it was 67.25. Why I'm showcasing the cutoff to you? Because whenever you prepare for phase 1 exam, you generally forget very important aspect, that this examination is qualifying in nature. And this examination is qualifying in nature. That means your time investment for these or for this particular section should be very precise, so that you can qualify and invest more and more time for the phase 2 part. In case of phase 1 examination, we have 4 sections: general awareness, English, quant, and reasoning. But if you see the sectional cutoff of all these 4 sections, it is 25%, and this is highest sectional cutoff till date. अगर आप पूरा का पूरा चार्ट देखेंगे तो 25% से ज्यादा सेक्शनल कट ऑफ कभी भी नहीं गई। किसके लिए? आपके फेज 1 सब सेक्शंस के लिए। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर फेज 1 एग्जामिनेशन, दैट इज क्वांट एंड रीजनिंग, स्पेशली क्योंकि जब आप इसका सिलेबस चेक करेंगे एज पर द प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस, इट्स प्रीटी ह्यूज। और अगले 60 दिन में अगर आप सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का पूरा सिलेबस करने बैठोगे, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू कवर फेज 2, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट phase 2 syllabus at least once before we sit for the phase 1 examination. Then only there is a possibility to clear this examination. अब क्वेश्चन ये है कि सर, अगर आपने कहा कि क्वांट और रीजनिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो प्रॉब्लम यही है कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. So I would just say, especially for quant and reasoning, you need to play really very smart. You need to play really very smart. There is no point covering each and every topic. There is no point reading each and every topic which is mentioned or which has been discussed on different platforms. For that, I open up the screen for you, which is really very important. In case of quant, I will be coming up with only 3 topics. So which all topics are important if we talk about quantitative aptitude? Guys, in case of quantitative aptitude, the topics which are important, it includes the first one, that is DI, data interpretation. Second one is number series, and the third one is quadratic equation. बस इसके अलावा कोई आपको कहे प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, या फिर कोई कहे इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ लो, टाइम एंड वर्क पढ़ लो, इट्स अप टू यू, पढ़ लो। लेकिन अगर आपको इस बार एग्जाम क्लियर करना है, आपको भी पता है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो उसको दिमाग में रखते हुए अगर आप ये 3 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इन डेप्थ जाकर करते हैं, जिसमें आप you cover all the different types of DIs, even you practice the missing DI and all, in that particular scenario, you will be in a position to clear the quadratic, you will be in a position to clear the quant section pretty easily.
अब क्वेश्चन ये है कि सर आप कैसे बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ओनली 3 टॉपिक्स आई कैन क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ? द रीजन इज, पहला, सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम है, दैट इज ओनली 25%, विच इज 7.5 मार्क्स आउट ऑफ 30। एंड इन 3 टॉपिक्स में से पिछले कुछ सालों का अगर मैं आपको एनालिसिस दूं, इन on an average 14 to 17 questions are asked out of 30। तो जब 30 में से 14 से 17 क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, then it's quite obvious there is no point reading and learning the other topics. It is going to be a pure wastage of time which we have to ignore। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा, सर डीआई के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। आई अग्री, तो उतना ही पढ़ो ना जितना रिक्वायर्ड है। हु इज सेइंग यू टू सॉल्व very difficult questions related to profit and loss? Who is asking you to solve very difficult questions related to ratio and proportion? Who is asking you to solve very difficult question on time and work? Basic idea, basic understanding of the arithmetic topics honi chahiye, and I believe if you are a graduate, 99% you have that basic understanding. Selling price minus cost price is equals to profit. Profit divided by cost price is the percentage. So all these parts are very much clear. Still अगर clear नहीं है तो जब आप DI पढ़ेंगे, DI related different questions solve करेंगे, उन questions में जब आपके पास profit loss या फिर time and work related कुछ DIs आएंगी, उन DI को जब आप solve करने जाएंगे, हो सकता है पहली बार उस DI को ना सॉल्व कर पाए, लेकिन जब आप उसका सॉल्यूशन चेक करेंगे, यू विल गेट दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, बस मुझे इतना ही आना चाहिए, इसकी मदद से मैं DI को आने वाले दिनों में जरूर सॉल्व कर पाऊंगा। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन अनिरुद्ध। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ रीजनिंग, अगर मैं कहूं रीजनिंग को हम बहुत इजिली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसा? एक पार्ट है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल, जिसमें मोटा मोटा 50% ऑफ द सिलेबस कवर होगा, या कहें कि 50% ऑफ द एग्जामिनेशन कवर होगा, 30 क्वेश्चंस। और बाकी के जो 30 क्वेश्चंस है, दे विल बी आस्क्ड फ्रॉम साइलॉगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, दे विल बी आस्क्ड फ्रॉम डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉजिकल रीजनिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा you should not focus on logical reasoning much, because logical reasoning में perfect answer click करना is not easy. What you think may not be right for me. What I think may not be right for you. So let's not waste time in finding who is right or wrong. Let's leave the logical reasoning part and let's focus on puzzles and sitting arrangement. We focus on alphanumeric series. We should focus on silogs, direction, blood relation, and out of again these 5 topics, you will be in a position to attempt 45 questions out of 60। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि भैया 60 में से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 45 मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी एबल टू स्कोर 45 मार्क्स ना। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट स्कोरिंग मच, दिस एग्जामिनेशन इज अबाउट clearing and grabbing the job. So in that particular case, we are not here to top the examination. We are here to clear the exam in next 60 days. For that particular reason, if you are following these 5 topics, you will be in a position to very easily score more than 15 marks out of 60 so that you can clear your sectional cutoff। और मैं इतना ही चाहता हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि इन 8 टॉपिक्स को पढ़कर 3 for your quant and 5 topics for your reasoning, you have to clear the sectional cutoff. If you are clearing the sectional cutoff at boundary marks, then also I'm happy। अगर आप quant में 8 marks score कर रहे हैं, I'm okay with it। If you're scoring only 16 marks in reasoning, I'm still okay with it, because from quant and reasoning, if you have scored the bare minimum 16 plus 8, that is 24, still you are in a very healthy position to clear this examination। Now you must The third section of your examination is English। और English एक ऐसा section है जिसे we miss। Why we miss? 2 thoughts। पहला thought, मुझे English आती है, दूसरा thought, मुझे English नहीं आती। So I don't care that whether you know the language or you don't know the language, if you want to clear this examination, English is going to play a really very important role, especially in your phase 1 exam, because in case of English you must target to score more than 20 marks। I'll discuss what all topics you need to cover for English, but before I go ahead, in order to
in order to answer most of the questions which are popping up in the chat box कि सर ये जो quantitative aptitude है इसके जो आपने topics बताए हैं it will be helpful or not. In order to add assurance to my words, I have the analysis of the past few exams. If I discuss the analysis of 2024 with you and then 2023 with you, in 2024 अगर आप ध्यान से देखें 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आए थे, 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए थे और 15 क्वेश्चन डीआई से आए थे. दैट मींस मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 21 क्वेश्चंस were asked only and only from the 3 topics which we just discussed for quantitative aptitude. In case of reasoning 25 क्वेश्चन पजल्स, 4 साइलॉगिज्म, उसके बाद मैंने आपको अगला जो टॉपिक बोला था वो था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन. अगर आप इनको भी ऐड करेंगे 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 25 37, 12 और 25 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चंस they were asked from all the 5 topics which I just mentioned in your reasoning paper in 2024. इतना ही नहीं, you just go for 2023. 2023 में 15 से 20 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट 4 से 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, उसके बाद 3 से 5 क्वेश्चन ऑन साइलॉगिज्म, डायरेक्शन सेंस पे 3 से 5 क्वेश्चन. अगर आप इनको भी ऐड करेंगे द टोटल इज अगेन गोइंग टू बी अराउंड 30 प्लस और 35 प्लस. तो अगर आपके पास अटेम्प्ट करने का कैपेबिलिटी 50% से ज्यादा है एंड यू हैव टू स्कोर only 25%, that is possible if you have pretty good accuracy, and that accuracy can be achieved by more and more practice. Now let's move on to the next section which is generally ignored by most of the students, that is English. मैं आपको एक चीज बहुत clearly बता दूं, if you want to crack the phase 1 examination, in that particular case English is going to be a very important section where you will be focusing 20 plus marks out of 30. Before I move ahead, I would like to take few questions. पहला है सर एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो काफी टफ मिलते हैं. मैं मानता हूं एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो टफ है. अब क्वेश्चंस टफ क्यों है उसके 2 रीजंस हैं. पहला कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी और दूसरा है कैलकुलेशन. हमें ज्यादा टफ ये जो क्वेश्चंस लगते हैं दैट इज नॉट प्योरली बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ऐसा नहीं है कि आपके सामने डीआई का क्वेश्चन आया और आपको हवा ही नहीं लगी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. आपको पता है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन है, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, काफी ज्यादा आप ये कहो कि स्टेप्स जो स्किप किए गए हैं हमारे इंफॉर्मेशन में उसे हमें निकालना होगा सो दैट वी कैन आंसर द क्वेश्चन. आपको जो है डिफिकल्टी लगती है वो इसलिए लगती है बिकॉज यू सिट इन द एग्जाम फोकसिंग ऑन कि मुझे 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने हैं. दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट. Next time when you follow the strategy which I am giving you, if you are only attempting the important topics which I just mentioned, that means you have 30 minutes to solve almost 15 questions. तो हर मिनट हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट. अगर डीआई आ गई तो 2 DIs के लिए आप 10-10 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हैं. और अगर आपने 2 DI पे 10-10 मिनट इन्वेस्ट किए you will surely be in a position to answer. ठीक है जी. इन केस ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल मेरा आंसर फिर से वही है. आपने टॉपिक्स फाइनलाइज कर लिए कि these are the topics which you are going to solve in the examination. Sit in the exam. The moment reasoning section appear in front of you, start scrolling it up. पूरे का पूरा रीजनिंग सेक्शन देख लो और उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो साइलॉग बेस्ड क्वेश्चन. साइलॉग हो गया, उसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट अगर आपने पढ़ा है, इनइक्वालिटी अगर आपने पढ़ा, अल्फान्यूमेरिक सीरीज अगर आपने पढ़ी है, इन्हें पहले अटेम्प्ट कर लो. मान लो 12 या 10 या 8 क्वेश्चन यू वर एबल टू सॉल्व फ्रॉम दीज टॉपिक्स. उसके बाद बचा क्या, सिर्फ 1 या 2 सेटिंग अरेंजमेंट अगर आपने बना लिए यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम. तो आपने ये जो 8-10 नंबर लिए दैट यू हैव स्कोर्ड ओनली इन 15 to 20 minutes, and after that you still have 25 minutes to solve only 2 sitting arrangement. And I'm pretty sure if you are in good practice, you will surely be able to solve those 2 sitting arrangements in next 25 minutes. I hope you will agree to me. Just say yes in the comment section. ठीक है जी. Moving on to major area है, that is your reading comprehension plus para jumble. Reading comprehension और para jumble को आप तभी बढ़िया सॉल्व कर पाओगे if you have good reading skills, if you are reading lots and lots of newspapers, your content on regular basis.
तो अब प्रॉब्लम ये है कि सर हम न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं रहे, बट आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग थ्रू विद द करंट अफेयर्स magazines, you are reading the current affair PDFs, you are reading the at least newspaper articles which I mentioned in my previous videos. अगर आप उतना भी पढ़ रहे हैं, that means you have a good connection with your reading area, and if you have those skills to identify, to analyze, to come up with a conclusion while reading the content, you will be in a position to answer the questions. अगर अभी भी आपके पास आपको लगे कि ये टैलेंट नहीं है, ये रीडिंग करते हुए किसी चीज का कंक्लूजन समझ लेना, उसे कंक्लूड कर लेना, उसे आई वुड से उसका एनालिसिस कर लेना, if you still miss that, then I have a solution. The solution is for next 60 days invest at least half an hour on newspaper, और न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स और एडिटोरियल सेक्शन पढ़ो, one from the Hindu, other one from the, let's say, Financial Express, और उन दो आर्टिकल्स को एनालाइज करने की कोशिश करो. What was the article? What are the areas mentioned in the article? उसकी समरी क्या होगी? If you go for this practice for next 60 days, it will not only improve your reading skills, it will also improve your vocab, it will also improve your writing skills, which is going to help you a lot. Last is, before you target 20 plus marks in English, you must have good understanding of the grammar rules. अब grammar rules को बैठकर याद नहीं करना, एक बार grammar rules पढ़ लो. Once you have read it, then start implementing it by practicing more and more questions. तो English का एक ही solution है. इंग्लिश ज्यादा पढ़ने से कभी नहीं आती, इंग्लिश प्रैक्टिस ज्यादा करने से आती है. ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, चाहे फिर वो क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में पहले पूछा गया हो, चाहे वो एसबीआई है, एसबीआई पीओ है, या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस है, आरबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी है, या फिर कोई और एग्जामिनेशन है. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट मोर एंड मोर क्लैरिटी how to solve reading comprehension, how to inculcate the information in the reading comprehension. You will be able to arrange the sentences in an appropriate manner, and you will be able to apply your grammar rules more appropriately. ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ आ गया यहां तक. अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, दैट इज योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन. अब पहली चीज हमने अभी तक ये देखा था कि we will be scoring 8 in quant, we will be scoring 16 in reasoning, and let's say bare minimum we will be scoring 18 marks in English. ये मैं आप लोगों के लिए टारगेट सेट कर रहा हूं. दिस इज द टारगेट विच यू कीप विद योरसेल्फ. कितने मार्क्स तो स्कोर करने ही करने, इसके बिना इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू क्लियर दिस एग्जाम. तो ये हो गया 18 plus 16, सॉरी हाँ, 8 plus 16 is 24, 24 plus 8 कितना होगा? 42 if I'm not wrong. ये जो टोटल बना ये हमारे पास कितना बन गया? सो दैट इज 42, है ना. तो अभी तक हमने 42 स्कोर कर लिया आउट ऑफ 60 plus 30 plus 30, दैट इज आउट ऑफ 120. अब हमारे पास बचा 80 मार्क्स का पेपर, और जो हमारा 80 मार्क्स का पेपर है, दैट इज योर करंट अफेयर्स. एंड आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल मस्ट हैव ह्यूज प्रॉब्लम विद द करंट अफेयर्स एज वेल. और वो भी तब जब हम आज इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जब हमारे एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन बचे और हमें करंट अफेयर्स काफी सारे महीने का कवर करना है. देन हाउ वी आर गोइंग टू cope up with the current affairs? So I'll quickly give you the answer to this. First of all, if I talk about the current affairs, so in case of current affairs, I agree that it is tough. Why it is tough? Because its syllabus is undefined. We are still not very sure that how many months of current affairs we need to cover. We are still not aware that what should be the correct depth of the news we need to follow, what all sources we need to follow. We are still confused that should I prepare for phase 1 and phase 2 current affairs simultaneously. So I will be answering all these questions related to current affairs in next 5 minutes. So my first answer is, if the current affairs syllabus is undefined, what should be the areas which you need to cover? Then my answer would be, if you want that your current affair is doable, it is possible only if you have this clarity that majority questions which are going to be asked even from the current affairs, that will be from your syllabus. What I'm trying to say, agar question aata hai related to RBI master direction ya RBI circular, so this is the part of your syllabus. They have mentioned in the syllabus syllabus. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है related to gender issues in the country,
if the question is asked related to poverty, if the question is asked related to unemployment, these all are the current affairs based areas which can be asked. But all these areas which can be asked in the current format, they are relevant, they are related to your syllabus. तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, you must have a clarity कि मेरे एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है. Don't go for international relation based news. No one is going to ask you because that is not mentioned in your syllabus. फिर मुझसे कोई पूछे कि कितने महीने के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है. सो आई हैव आंसर दिस क्वेश्चन n नंबर ऑफ टाइम्स. अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जुलाई में हमारी नोटिफिकेशन आ जाती है एंड लेट्स एक्सपेक्ट कि हमारा एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर में होगा, तो अगर हमारा एग्जामिनेशन सितंबर में होगा तो उसका मतलब ये हुआ अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च. तो इसका मतलब पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो दिस आई हैव आंसर्ड n नंबर ऑफ टाइम्स दैट इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, करंट अफेयर्स का टारगेट क्या होगा सर? आपके करंट अफेयर्स का टारगेट होगा फ्रॉम मार्च 2025 ऑनवर्ड्स. मतलब अगर आपने मार्च से अगस्त तक के करंट अफेयर्स थॉरली कवर कर लिए, ट्रस्ट मी गाइस, you will be in a situation to solve majority questions based on current affairs. जैसे मैं कहने कहा majority questions, I am making this point very clear. I am making this point very clear that you won't be in a position to solve 100% question in the examination, क्योंकि ये एग्जाम 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए नहीं है. एग्जाम नौकरी के लिए. इट इज फॉर अ जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन. यू हैव टू लीव योर college mentality that I want to score 80% or 90%. That is not going to happen over here. Past exam analysis is really very important, which shows that in phase 1, majority questions in the general awareness section will be from current affairs, and past analysis shows that majority questions in the ESI paper 1 of phase 2 is also again and again from what? Sir, it is also again and again from the current affairs section. Now let's move ahead. The next point I have for you all is करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो अनडिफाइंड है. ये सारी चीजें हमने पहले से डिस्कस कर ली हैं. अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आता है. इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शुरू हो रहा है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फेज 1 है, फेज 1 में जो जनरल अवेयरनेस है, आई कैन डिवाइड दैट जनरल अवेयरनेस सेक्शन इनटू 3 कैटेगरीज. 70 to 80% क्वेश्चंस आएंगे आपके कहां से? करंट अफेयर्स रिलेटेड. कुछ क्वेश्चंस, वेरी फ्यू क्वेश्चंस अगर आए तो आ सकते हैं आपके स्टैटिक जीके से. स्टैटिक जीके का मतलब अगर आपसे कोई डे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ऑन 5th of June we celebrate which day, so that is a static question, क्योंकि वो 5th of June का डे अगले साल भी सेम रहने वाला. बट अगेन दैट हैज बीन derived फ्रॉम द करंट अफेयर्स, क्योंकि वो जून वाली न्यूज अभी हाल ही में कंप्लीट हुई है और एग्जामिनेशन हमारा सितंबर में है. तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड the current affairs of the month of June. We will be in a position to answer them. And if there is a question related to the banking and financial terms, financial concepts, for example, moonlighting पे क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स पे क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन ऑन टर्म रिलेटेड टू project financing. So all these terms, these are the financial terms, but why they have been asked in the examination? Because recently they were in news. तो इसका मतलब ये हुआ, if you have covered your current affairs thoroughly, you will be in a position to solve not only the questions based on current affairs, but you will be in a position to solve the questions which can be derived from the current affairs, which will look like static question or maybe questions belonging to financial or banking awareness. ठीक है जी. Now मूविंग अहेड, सर अगर मैं ईएसआई और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो ईएसआई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करंट अफेयर्स या कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है? तो मेरा आंसर सबसे पहले तो ये होगा कि करंट अफेयर्स को अपने दिमाग में डिवाइड मत करो. डोंट डिवाइड द करंट अफेयर्स इन योर माइंड दैट इट इज डिफरेंट फॉर फेज 1 एंड फेज 2. करंट अफेयर्स इज सेम फॉर बोथ द फेजेस, बट आप इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फॉर योर ईज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. पहला है जनरल करंट अफेयर्स, which is important only and only for phase 1. यहां से phase 2 में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है. फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, एमओयूज, समिट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज. इनमें से अगर मैं कहूं बजट और इकोनॉमिक सर्वे, it has an importance that it can be asked in phase 2. Even the questions on government initiatives can be asked in phase 2, and even the MOU based questions can be asked in phase 2. तो इसे ये कह देना कि ये सिर्फ और सिर्फ phase 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, this is wrong. तो
इन फेज 2। अब अगर मैं बात करूं ईएसआई की, तो ईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट organization, international organization, private organization presented reports, indices, very important. Then government publications respective to sustainable development and many other areas, that is important. International publications is important, and how you can cover it. So you can cover it through the regular updates which is given on PIB. तो ये वाला जो एरिया है, this can be asked in phase 1, this can be asked in phase 2. और अगर मैं आपको बताऊं 2024 में जो लास्ट आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें आउट ऑफ 80 ग्रेटर देन 40% क्वेश्चंस, यानी 30 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए थे। 32 प्लस क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम फाइनेंस करंट अफेयर्स, अलोन फाइनेंस करंट अफेयर्स। अब आप कहो कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज रॉन्ग। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1 एज वेल, फॉर विच आरबीआई अपडेट्स आर इंपॉर्टेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड अपडेट्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो एरिया है, इस एरिया का एक सॉल्यूशन है। इस एरिया का सॉल्यूशन ये है कि रादर देन गोइंग एंड वाचिंग द वीडियोस, यू कैन कवर दिस पर्टिकुलर एरिया विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ्स। और आपको जो पीडीएफ्स पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है, ध्यान से देखना। आपका एग्जामिनेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सितंबर में, ठीक। उस केस के हिसाब से अगस्त वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई मंथ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जून मंथ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 महीने के करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स जो हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनकी जो मंथली पीडीएफ है दैट इज अवेलेबल ऑन द टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इन पीडीएफ्स को कवर कर सकते हैं। जैसे ही आपने 3 मंथ की पीडीएफ को कवर कर लिया, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मंथ कुड बी योर मे, नेक्स्ट कुड बी योर मे, उसके बाद अगर टाइम मिले तो अप्रैल, उसके बाद अगर टाइम मिले तो मार्च। तो आपको इस फॉर्मेट पे इसे कवर करना है। अगर आपको लग रहा है कि अब जून से आगे नहीं जा पा रहे, यू कैन इग्नोर मे अप्रैल मार्च। अगर आपने मे कर लिया, यू कैन इग्नोर मार्च अप्रैल, बट डोंट थिंक ऑफ इग्नोरिंग जून जुलाई अगस्त। इसके बिना अगर आप गए अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, एमओयूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पढ़े बिना, देन इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हुआ, समझ आया? सारे आंसर्स मिलेंगे, आप बस वेट करो। आई विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरी डाउट इन द एंड ऑफ द सेशन। अब आती है बात हमारे फेज 2 के करंट अफेयर्स की। तो फेज 2 के करंट अफेयर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। इसकी एकमात्र एक सोर्स है, मेजॉरिटी जो अपडेट्स हैं वो पीआईबी में आ ही रही, चाहे वो करंट अपडेट्स हो, और जो पास्ट में अपडेट्स पीआईबी पे आई हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए we are already providing monthly compilations. अब मैं why I'm referring the monthly compilations which you need to cover from March onwards, because right now you are not in a position to watch the entire videos which have been done in the past month. So what you can do is you can refer the monthly PDF, or you can follow the compiled, I would say, the videos which are available on our YouTube channel. और ये जो monthly PDF है, this is available on our Testbook platform. Moving on to the next, in case of finance, we know that the questions can be asked from banking and financial world updates. For example, कोई MOU sign हुआ है, कोई agreement हुआ है between few banks, that is important. Most important area is this one. RBI का एग्जाम है, तो RBI related questions obviously पूछे जाएंगे। फिर चाहे वो RBI की latest notifications हो, press release हो, या फिर आप RBI के official speeches हो, या फिर RBI द्वारा present की गई reports and indices है। For example, we are going on with a session like फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, अभी 4th पार्ट और होगा। तो इसका मतलब एक रिपोर्ट को अगर आप 4 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब उसका रीजन क्या? सर ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट से क्वेश्चन काफी डायरेक्ट और डेटा ओरिएंटेड आता है। तो इनके जो डेटाज है दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बस स्पेसिफिक न्यूज को टाइटल कर लो, स्पेसिफिक रिपोर्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लो। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप बाकी सारी आरबीआई की पब्लिकेशन छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्लस आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, इन दोनों रिपोर्ट्स में मेजॉरिटी डेटा, मेजॉरिटी कंटेंट इंपॉर्टेंट है, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। लास्ट is the government initiatives. Any government scheme or any government initiative related to financial sector it is done is very important, but still I would say this is the most important area. अगर आप बाकी इग्नोर भी कर रहे हैं, so just cover this thoroughly. It will not only help you in phase 1, it will help you in phase 2 examination as well. तो मैंने वो आंसर आपको दे दिया, how many months of current affairs is important. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ओवरऑल my answer is since March
लास्ट 3 मंथ्स की भी कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व योर पर्पस. बट रेस्ट ऑफ द न्यूज जो हमने अभी डिस्कस की, ईएसआई और फाइनेंस वाला पार्ट, इन दैट पर्टिकुलर केस you have to or you must focus on your last 6 months since March 2025. Done it? Okay. Now, moving on to the next part, that is challenges in the RBI Grade B Phase 2 preparation, and then I will give you the shortlisted topic for Phase 2 as well. But उससे पहले अगर आपके कुछ doubts हैं, so I can take your doubts right now. You can please post your doubts specifically related to Phase 1. I'll take few minutes. First, I'll answer your Phase 1 doubts, then I'll move on to Phase 2. Phase 2 में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे because we still have 90 days to go. Right now, the first aim is Phase 1 as well as current affairs. कोई current affairs means it is not Phase 1 alone, it is Phase 2 as well. तो अगर आप current affairs thoroughly कर रहे हैं, that means you have already done 40% of your Phase 2 syllabus, especially for ESI and finance. बचा क्या? मैनेजमेंट और इंग्लिश ही तो बचा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. फेज 1 के लिए कोई लाइव क्लास होगा? बिल्कुल होगा. वी विल बी कमिंग अप विद अ क्रैश कोर्स वेरी सून, एंड द मोमेंट विल कम अप विद अ क्रैश कोर्स. इन दिस crash course we will help you to revise your entire syllabus before your examination, and these specific topics are going to be targeted. So grade B और SBI PO की preparation साथ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. It is like if you're preparing for RBI Grade B examination, you will be in a position to clear many of the bank exams, क्योंकि RBI Grade B का जो phase 1 है, this is the entire syllabus of your SBI PO और IBPS PO एग्जाम. चाहे फिर वो प्रीलिम्स देख लो या मेंस देख लो, सारा का सारा प्रीलिम्स प्लस मेंस इज इक्वल टू RBI phase 1. तो अगर आपने phase 1 को ढंग से पढ़ लिया, यू कैन इजीली क्लियर रेस्ट ऑफ द बैंक रिलेटेड एग्जाम्स फॉर श्योर. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अगला पॉइंट मेरे पास क्वेश्चन है, सर कैन वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो? देखो खुशबू तिवारी, इफ यू आर इन अ पोजीशन दैट यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट the competitive exams, आपने पहले अगर competitive exams दिए, you know you have to go with right material and specific topics. If you can stick to that, you can easily clear this exam. But अगर आप randomly पढ़ाई शुरू करेंगे और कुछ भी पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, then it won't be possible. I would suggest you go with a structured course with appropriate classes along with the PDFs, which will help you, and that is available on Testbook. Moving on to the next one. Sir, can you please provide monthly PDF on Telegram? I'll ask my team to do that if it is possible. Moving on to the next question. Sir, पहले वन लाइनर को नहीं आते यार, किसने कहा वन लाइनर आते हैं? पहले भी नहीं आते थे. 2024 में आप ये कहो थोड़ा सा बढ़ गया उसका लेवल, लेकिन आरबीआई में कभी वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए. आरबीआई का जनरल अवेयरनेस का लेवल 2021 से काफी ज्यादा अच्छा रहा है. इफ यू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर्स, देन ओनली यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर इट. सर आई हैव 57% इन 10th. हाँ, उसका कोई इशू नहीं है. दे विल आस्क यू ओनली अबाउट योर ग्रेजुएशन स्कोर. काशिफा नूर, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मिड ऑफ सितंबर में एग्जाम होना चाहिए. अगर नोटिफिकेशन अगले 5 से 10 दिन में आ जाती है तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है. If you're preparing for CAT as a backup, do I need to prepare for RBI separately? If you're preparing for CAT, तो इसका मतलब आपका phase 1 का QRE वाला portion is pretty good. You just have to focus on current affairs and the phase 2, which I will be discussing in some time. Yes, you can do it. Is it practical to keep an eye on grade B if preparing for grade DEPR? Yes, if you're preparing for DEPR, you can easily attempt your DR post as well, but उसमें जो एक्स्ट्रा सिलेबस है दैट यू नीड टू कवर. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट ईयर का एग्जाम डिपेंड करेगा कि इस साल का एग्जाम कब होगा, तभी हम बता पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन कब होने के चांसेस है. ठीक है, चलो आप जो भी है आप कांटेक्ट कर लेना रिगार्डिंग पीडीएफ्स एंड ऑल. तो उसके लिए आपका जो कांटेक्ट है या जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बेसिस पे यू विल रिसीव द कॉल, और जो भी आपके पीडीएफ रिलेटेड डाउट्स हैं और या फिर आपके क्लासेस रिलेटेड डाउट है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा. नाउ आई विल बी फोकसिंग ऑन द फेज 2 वाला पार्ट. आई एम मूविंग ऑन टू द फेज 2 वाला पार्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फेज 2. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू डिस्कस सर्टेन चैलेंजेस व्हिच आर विद द फेज 2 सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा चैलेंज है कि सर इसका जब हम सिलेबस खोलते हैं, इट्स सिलेबस इज वेरी 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 वास्ट.
और इतने वास्ट सिलेबस को कवर करना इज रियली वेरी टफ। कंटेंट है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आज की डेट में अगले 60 से 90 दिन we have to prepare for phase 1 and phase 2 simultaneously. That is the third problem, and the biggest problem is descriptive writing is going to play a very important role in phase 2 examination. What to do for descriptive writing specifically? Let's try to find the solution of all these challenges. First of all, I would say, guys, preparing for phase 2 is not same as for phase 1. यहाँ पर आप टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते, because here you never know whichever topic mentioned in the syllabus can be asked in the descriptive format, और अगर वो आया डिस्क्रिप्टिव में तो 10 या 15 मार्क्स का आएगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस ही कम हो जाएंगे if you are not in a position to answer a particular question in the examination. अगली बात अगर मैं कहूं तो मैं ये भी कहूंगा कि फेज 1 में सक्सेस रेट काफी कम है इन कंपैरिजन टू फेज 2। तो अगर आपका फेज 1 क्लियर हो गया तो समझ लेना दैट यू हैव इंक्रीज्ड the probability that you are going to become an RBI Grade B officer, because the success rate of phase 2 is very much high in comparison to phase 1. Now we will be checking up the syllabus for finance and management. पहले मैं finance का syllabus आपके सामने open करूंगा। This is the finance syllabus. अब question ये है कि सर ये जो finance का syllabus आपने हमें दिखाया स्क्रीन पर, इतना syllabus अगले 60 दिन में cover करना is impossible. तो करें क्या? Then I would say you need to go pretty specific. और अगर मैं specific की बात करूं, you need to go with some of the must do topics, जिसके लिए ये क्लास मैंने आपकी अरेंज की है। सबसे पहला must do topic है recent developments in the global financial system and its impact on the Indian financial system. For example, अगर आप कहें global financial system में there is an introduction of cryptocurrency के साथ साथ एक टर्म आई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब आजकल चल रहा है AI. So all these technologies, how they are impacting the banking sector, that is your second area which you need to focus upon. Third area which you need to focus upon is development in digital payments. After that, अगर मैं कहूं अगला जो एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, corporate governance in banking sector. Lastly, we have the most important part, that is union budget and economic survey. इसके अलावा अगर आप इनमें से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो I would like to highlight few topics, जैसे ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंपॉर्टेंट है, you must know about them. इसके अलावा you must have क्लैरिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ आरपीआई। बाकी अगर आप चाहें तो सारे का सारा जो सिलेबस है आप इग्नोर कर सकते हैं। मैंने एक बहुत बड़ा चंक आपके सिलेबस का आपको इग्नोर करने के लिए बोला, दैट इज योर फाइनेंशियल मार्केट। अब आप कहो कि सर फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो सर क्यों आप कह रहे हैं छोड़ दो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, यू गेट 3 ऑप्शंस फॉर 10 मार्कर, जिसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एनी 2 आउट ऑफ 3. Then you get 3 questions for 15 marks question. Again, you have to attempt any 2 out of 3. तो उस केस में अगर एक क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट से आया तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इट्स प्रीटी टफ. You need to dive pretty deep in order to understand the financial market, mutual funds, operations, ETFs, derivatives, and many things like that. If you want, you can ignore it. But बाकी जो मैंने areas बताए, you cannot even think of avoiding them. If you have avoided them, it would be impossible to clear this examination. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? समझ आ गया? क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं दिख रहे हैं, if you feel that you are not able to visualize them, then I will be sharing the PDF with you. Those who have registered with us for this particular workshop, on your email IDs, registered email IDs, I'll ask my team to share this PDF so that you can find out the important topics. In case of management, I would suggest you go for motivation. I would suggest you go for leadership. Then I would suggest you organizational development, specifically organizational change. This is a very important क्वेश्चन जहां से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके अलावा इन केस ऑफ ethics वाला section, cover the corporate governance. That was corporate governance in banking sector. This is corporate governance in general, very important.
कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो एथिक्स है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो भी चलेगा, अगर समय मिले पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एक हैक बताऊं फॉर मैनेजमेंट स्पेसिफिकली, देन इट्स माय रिक्वेस्ट टू कवर भी 60 दिन है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में लगे कि टाइम कम पड़ रहा है, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, देन यू कैन फॉलो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आई मेंशन। बट फॉर फाइनेंस यू मस्ट फॉलो गिवन टॉपिक्स ओनली। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। नाउ द सेम वे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ईएसआई। ईएसआई का सिलेबस भी देखने में काफी ब्रॉड है, बट द एरियाज व्हिच यू नीड टू फोकस अपॉन दे आर अगेन वेरी स्पेसिफिक। इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड सजेस्ट you have to cover a topic that is Indian economy. Indian economy में 3 sectors हैं. First one is your agriculture sector, then is your industrial sector, and third one is your service sector. ठीक है? Sorry, 1 second. Industrial sector लिख दिया ना, तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस हो गया, और ये आ गया आपका एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये 3 आपके टॉपिक्स हैं जिसके बारे में you must know what happened in these sectors before 1947. You must know what happened in these 3 sectors between 1947 to 1991. You must know what happened in these 3 sectors from 1991 to 2020. फिर कोविड में कैसा रहा इन तीनों सेक्टर्स का हाल, इनमें से कौन से सेक्टर ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, सर्विस सेक्टर ने काफी अच्छी एफडीआई को इनवाइट किया, एंड लास्टली यू शुड नो द करंट स्टेटस ऑफ दीज 3 सेक्टर्स। अगर आप ईएसआई के सिलेबस को इस फॉर्मेट में, इस टारगेट से पढ़ोगे, देन इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू एनालाइज कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किसे इग्नोर करना है, किसे इग्नोर नहीं करना। तो ये दिस इज द ओनली एरिया विच यू नीड टू रिमेंबर। इन केस ऑफ सोशल इश्यूज में स्पेसिफिकली डेमोग्राफिक ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑब्वियस रीजन कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है इट इज वेरी प्रॉमिसिंग, उसकी वजह से क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसके अलावा जेंडर इश्यूज विच आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री, दे आर इंपॉर्टेंट। लास्टली हेल्थ एंड एजुकेशन वाले सेगमेंट को आप एक बार पढ़िएगा जरूर। वैसे तो इन्होंने सिलेबस में हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एरियाज गिवन थे वो हटा दिए, बट स्टिल they come up with the reports and indices based questions on health and education, तो उसे भी आपको देखना होगा। बाकी जो पार्ट है पॉवर्टी एंड ऑल, अनएम्प्लॉयमेंट और ऑल, अगर आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज पॉवर्टी, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू डिस्कस different types of unemployment, but yes they can ask you what is the current status of unemployment in India, और वो आपने ऑलरेडी मेरे साथ करंट अफेयर्स के सिलेबस में कवर कर लिया एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। ठीक है जी, क्लियर हो गया, पॉइंट समझ आ गया। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टर्म्स ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपने हमें बताए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच यू आस्क अस टू कवर, how can be you so sure? I'm so sure on these topics because of my past experience. Since 2016 I am looking this paper very closely, और उसके बेसिस पे ये एनालिसिस मैंने बनाया, और मैं कह सकता हूं कि मेरा जो एनालिसिस है that has been created out of the previous year questions. तो ये जो previous year questions हैं they are really very important because they help us to understand what is the depth of the examination. They help us to understand what are the important areas which require special attention. They even help us to analyze the trend of the examination, and all this analysis itself I have taken up all these topics which I have mentioned you in this particular discussion. ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अगर मजा आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डू लेट मी नो इन दी chat box how was the session, and now we can take up your doubts. Descriptive writing check करवाने के लिए for this, yes we are offering one-on-one mentorship session in our courses. If you subscribe our courses, we will provide you with one-on-one mentorship, and in the one-on-one mentorship you can even ask your mentors to review your descriptive answers as well. That possibility, that I would say service is available. So final year student दे सकते हैं examination. See, if your result is out
before the examination, before the notification, or the date which is mentioned on the notification, then you are eligible, otherwise not. Even if you are passed out, लेकिन अगर आपका सिलेबस, अगर आपका अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल. रिजल्ट आना चाहिए एज पर द डेट जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन होगी. मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग वो डेट 1 जून होनी चाहिए या 1 जुलाई. अप्रैल पे नहीं जाएगा आरबीआई. दैट इज जस्ट माई एक्सपेक्टेशन. रेस्ट वी हैव टू वेट एंड वॉच. Sir, how to start descriptive writing, how to get questions for them? Deepa, descriptive writing is itself will be coming up with one more session where I'll discuss with you art of writing a good descriptive answer. Okay, so I'll ask my team if there will be a visibility and feasibility, then they will surely schedule one more session where I will be discussing art of writing a good descriptive answer. It is noted. Is it fine? Is it fine, Deepa? So phase 1 and phase 2 का preparation एक साथ करना है? नहीं, phase 1 और phase 2 का preparation एक साथ करना है. मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि आपको करना क्या अगले 60 दिन में. In next 60 days, you should divide your day in 3 parts. एक पार्ट पे यू विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स. डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर आ रही है वो तो करनी है, उसके साथ साथ आपके जो पास्ट मंथ्स हैं, इफ यू हैव कवर्ड देम देन रिवाइज देम, इफ यू हैव नॉट कवर्ड देम देन कवर देम. ठीक है ना. दूसरा जो आपका पार्ट है दिन का वो होना चाहिए क्यूआरई के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश. If you are starting your preparation, then first go with quant. Once quant is done, go with reasoning. Once reasoning is done, then go with English. और उसके बाद practice. तो ये quant, reasoning, English के जो topics मैंने आपको बताए हैं, you should cover them in next 45 days. And next 45 days के बाद जो आखिरी के 15 दिन होंगे, that will be practice and solving the mock test. और third part of your day होगा, which will be your phase 2. और phase 2 में I would suggest you start with management. Try to cover the entire syllabus of management. Once you have covered management, इसी slot में you fit your finance. Once you have covered your finance, इसी slot में fit your ESI. Target ये है कि next 60 days में before you go for phase 1, at least your phase 2 syllabus is complete. जो topics आपके notification में mention है, जो topics मैंने आपको यहाँ mention करके दिए हैं, वो आपके complete होने चाहिए. That should be your strategy. Is it fine, Kashifa? I hope it is clear. Okay. Anant is asking me, sir, I have studied this. I have studied financial market in graduation and I have good grip. हाँ, obviously यार, मैं तो इस पर्पस से बता रहा हूँ कि जिसको नहीं करना, जो अभी शुरू कर रहा है, जिसके लिए नहीं है financial market, it's very new. Don't invest much time on it. If you can skip, if you don't know, skip it. If you know it, cover it. Simple. इसमें कोई discussion ही नहीं है. Sir, how can I get the PDF of this session? I'll ask my team to share the PDF on the same email ID which you have mentioned while registering for this particular workshop. ESI may out of three reports as a question, like, I don't understand, Anu, what is your question? So UPSC syllabus is enough to give RBI or not? UPSC syllabus is enough, but UPSC syllabus के साथ साथ you must have the target preparation keeping in mind RBI, जिसमें आप finance news को ज्यादा importance देंगे, RBI current affairs को ज्यादा importance देंगे, और UPSC में जो आप ignore करते हैं data and facts, यहाँ पे data and facts are going to play a really very important role. Rest is fine. Calculator allowed नहीं है RBI में, sorry Payal. Sir, can you provide list of topics for which one should prepare essays? हाँ, मैंने आंसर दे दिया जनक. In the next session, art of writing good descriptive answer, I will be discussing everything. Even I'll share the topics for English essay writing as well. So what should we do if we have complete finance ESI management syllabus with only one revision? Revise it again. Simple. अगर आपने एक बार कर लिया, उसे revise कर लो. Revise करने के बाद try solving questions based on the same topics which you have done. 2026 की classes जल्दी शुरू होंगी. So revision classes for phase 1 jaldi shuru hongi. Once the notification is out, we'll come up with the crash course. So we'll be conducting practice question sessions based on previous months. Yes, I will be doing it. एक बार notification आ जाने दो, then you will get n number of sessions for your current affairs practice and all.
Sir, I'm doing MBA. Can I put graduation? Yes, yes, you just put graduation. Don't mention about MBA. Otherwise, they will be asking you a number of questions in the interview. I'm correct. I'm correctly facing a lot of challenges in Quant, and I've also completed syllabus and current affairs. I don't understand how should I approach because targeting. I think, uh, I have given you the answer, Komal. What should be your target for next 60 days? And you, if you are approaching the exam in this form, you will be in a position to clear it for sure. So can this preparation strategy goes for SBI PO and IBPS PO? उसके लिए नहीं, उसके लिए तो सारे का सारा कॉन्ट, सारे का सारा रीजनिंग करना ही होगा, उसमें कोई और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स भी कॉन्ट और रीजनिंग पे डिपेंडेंट है, उसमें मेंस भी कॉन्ट और रीजनिंग पे काफी हद तक डिपेंडेंट। का रिजल्ट आउट है, यू हैव अ फाइनल मार्कशीट ऑफ योर BA segment, then you are eligible for it. Study plan available. We will be sharing the study plan very soon once the notification is out. So right now I'm 20 years old. So please tell me. Let's see, Dhruvika, what will be the age timeline they are coming up with. So uske basis pe hi it will be decided. So कैलकुलेटर का आंसर दे तो दिया पायल, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछोगे? डन हो गया, ठीक है. आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस. I would suggest Anant, try to follow one more test series so that you have a better result. So that will be all, guys, in this session. If you want to clear your examination and if you want to study and learn more about RBI Grade B, and you need one-on-one mentorship sessions, you need structured live courses, you need concise and appropriate study material, then you must subscribe our Testbook batches, which are available. It's a subscription format. Subscribe us for next 1 year, और उसमें आपके इस साल और अगले साल दोनों के लिए आप प्रिपेयर कर पाएंगे with single subscription itself. Thank you so much for joining, guys. We'll catch you in the next session. Bye bye. Take care. Good luck. God bless you all. I hope the session was fruitful. If you have spent your 1 hour almost with me, I think it was a fruitful session, guys. I hope you must have enjoyed it. You must be finding many important and new things in this session. This is going to help you a lot. Okay, तो ठीक है, फिर इसका मतलब मैंने आपका ज्यादा समय खराब नहीं किया, बल्कि उसको एक right direction दी, so that you can prepare pretty well. Thank you so much. Good luck. God bless you all. Bye bye.